So we had to start with energy level diagram. Okay. पिछली क्लास में हम लोगों ने बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम स्टार्ट किया था, तो उसमें हम लोगों ने स्पेक्ट्रल लाइंस वगैरह पढ़े थे और जो सारे सीरीज, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्किन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पीफेंड सीरीज के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग वही एनर्जी लेवल डायग्राम करेंगे और विल ट्राई एंड फिनिश दिस चैप्टर, जिससे कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यूक्लियाई वाला पोर्शन स्टार्ट कर सकें। जस्ट अ सेकंड बच्चों, 1 मिनट देना है। I was checking on the syllabus. तो इसमें तो कुछ नहीं हटा, न्यूक्लियाई वाले में से पोर्शन में से बहुत सारा चीज हटा है, तो न्यूक्लियाई वाले में हम लोग को सोचना पड़ेगा। So a diagram which represents the total energies of electron in different stationary orbits of an atom is called energy level diagram of that atom. Now in this diagram, total energies of different electron in various stationary orbits are represented by parallel horizontal lines drawn according to some suitable energy scale. तो basically parallel line, मान लो फोर्थ से फर्स्ट पे आया है, उसको हम लोग एक लाइन से शो करेंगे, थर्ड लेवल से फर्स्ट पे आया है उसको अलग से करेंगे, सेकंड से फर्स्ट जो है उसको अलग से करेंगे। तो ये सब पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग वेरियस ऑर्बिट्स को, स्टेशनरी ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और वर्टिकल लाइंस कनेक्टिंग एनी टू स्टेट्स represents the transition of the electron from one to the other of these two states. तो जो अलग अलग जो लेवल्स हैं, है ना, उनको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम में जो अलग अलग ऑर्बिट्स हैं उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो जंप है उसको हम लोग ये वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वर्टिकल लाइन कनेक्टिंग एनी टू स्टेट्स, राइट। मान लो n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है ना, और n इज इक्वल टू 3 है, राइट। ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 1 है। तो ये सारे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वर्टिकल लाइन कनेक्टिंग एनी टू स्टेट्स रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टू द अदर ऑफ दीज स्टेट्स। Difference of energies of two states gives the amount of energy emitted or absorbed according as the electron goes from higher to lower state. तो थर्ड से फर्स्ट में आया, तो यहाँ पे जो डिफरेंस इन एनर्जी है E3 और E1 के बीच में, that will be the energy absorbed or emitted. Now total energy of an electron in nth orbit of a hydrogen atom is, तो जो टोटल एनर्जी है
एक इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट में, दैट इज -2π² mk²e4 डिवाइडेड बाय n² h²। अब इन सब में वैल्यू डालेंगे, पाई का वैल्यू, m का वैल्यू, है ना, k का वैल्यू, e का, n, h, ये सब का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मतलब n का छोड़ के बाकी सब वैल्यूज जब इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये इसका जो वैल्यू आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, दैट इज -13.6 by n² electron volt. So on substituting the stationary standard values, we get E is equal to -13.6 n² eV. ठीक है, तो बेसिकली ये वाला याद रखोगे ना तो काफी है। मतलब बेसिकली तुमको ये सारे वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब हर बार सॉल्व करने समय इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 13 -13.6 बाय n², तो n अगर 1 दोगे तो -13.6, n का वैल्यू 2 होगा तो 13.6 को 4 से डिवाइड कर लेंगे और निकालेंगे। इस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, now putting n is equal to 1, 2, 3, we get the energies of electron in various stationary orbits as, तो अगर n का वैल्यू 1 डालोगे तो -13.6 डिवाइडेड बाय 1², मतलब E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 इज इक्वल टू -1.51। इस तरह से ये सारे वैल्यूज जितना अगर याद करोगे ना उतना बेटर है। तो वहां पे एग्जाम में कुछ निकालना ही नहीं पड़ेगा, तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो। सो दिस इज E5 is -0.54 electron volt, E6 is -0.37 electron volt, E7 is -0.28 electron volt। तो ये 7 वैल्यू याद करना, 13.6, 3.4, 1.51, 0.85, 0.54, 0.37, 0.28। इस तरह से कहीं पे लिख लेना और उसको 5-6 बार रिपीट कर लोगे तो अपने आप याद आ जाएगा। 13.6, 3.4, 1.51, 0.85, 0.54, 0.37 or 0.28, right? Now, energy levels of hydrogen atom are represented in energy level diagrams as shown in the figure. The principal quantum number n labels the stationary states in ascending order of energy. The highest energy state corresponds to n is equal to infinity. जब n infinity होता है तो E का वैल्यू 0 होता है, वो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट हो गया। ठीक है, तो जब n का वैल्यू इंफिनिटी है तो E का वैल्यू 0 है, और जब n का वैल्यू 1 है तब उस समय E का वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, so the highest energy state corresponds to n is equal to infinity and has energy E is equal to -13.6 by infinity square. So which is equal to 0 electron volt. Now this is the energy of the atom when the electron is removed from the nucleus and the electron is at rest. As n increases, energies of the excited state come closer and closer together as shown in figure. n is equal to 1 और 2 के बीच में देखो बहुत गैप है, 2 और 3 के बीच में गैप कम हो गया, 3, 4 के बीच में और कम हुआ, और इस तरह से ये कम होता जा रहा है। ठीक है, और जब इंफिनिटी हो जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट जब ऐसे एन इंक्रीज करेगा तो जो द लाइंस कम क्लोजर टू ईच अदर। नाउ note that an electron can have any total, ठीक है, an electron can have any total energy above E is equal to 0 electron volt। ठीक है, in such a situation, the electron is free and there is continuum of energy states above E is equal to 0 electron volt. The various spectral lines of hydrogen atom have also been drawn in figure. तो ये spectral lines देखो show भी हो रहा है। n is equal to 1 पे जो 2, 3, 4 इन सब से आएगा तो ये हमारा लाइमन सीरीज हो गया। पाल्मर सीरीज क्या हो गया, n is equal to 2 पे जो सारे आएंगे ऊपर से, मतलब 3, 4, 5 इनसे आएगा, वो बाल्मर सीरीज बनाएगा। पास्कन सीरीज मतलब n इज इक्वल टू 3 पे 4, 5, 6 से जो आता है। ब्रैकेट सीरीज जो n इज इक्वल टू 4 पे
है ना, 5, 6, 7 से आएगा। जो पीफंड सीरीज है वो n इज इक्वल टू 6 पे जो 7 और 8 से ऐसे आता है वो हमारा पीफंड सीरीज बनाता है। तो ये सारे सीरीज भी शो हो रहे हैं। Now de Broglie's explanation of Bohr's second postulate of quantization. So the second postulate of Bohr atom model says that angular momentum of electron orbiting around the nucleus is quantized. तो ये जो हमारा था mvr is equal to nh by 2 pi where n is equal to 1, 2 and 3 so on. Now, Louis de Broglie explained this puzzle in 1923, 10 years after Bohr proposed his model. According to de Broglie, the electron in its circular orbit as proposed by Bohr must be seen as a particle wave. So we know that when a string fixed at two ends is plugged, a large number of wavelengths are excited, but only those waves which have nodes at the two ends form the standing wave and survive. It means that in a string, standing waves form when total distance traveled by wave down the string and back is any integral number of wavelengths. Now, waves with other wavelengths interfere with themselves upon reflection and their amplitude vanish quickly. Hence, according to de Broglie, a stationary orbit is that which contains an integral number of de Broglie waves associated with a revolving electron. So, for an electron revolving in nth circular orbit, nth circular orbit of radius Rn, total distance covered is equal to circumference of the orbit, that is 2 pi Rn. The permissible orbit 2 pi Rn is equal to n lambda. So according to de Broglie, lambda is equal to h by mvn, where h by p hota hai, basically lambda is equal to h by mvn. Now where vn is speed of electron revolving in nth orbit. So 2 pi Rn is equal to n lambda की जगह h by mvn कर ले रहे हैं और mvrn is equal to nh by 2 pi. So that is angular momentum of electron revolving in nth orbit must be an integral multiple of h by 2 pi, which is the quantum condition proposed by Bohr in second postulate. Thus, the wave particles duality play the central role in the structure of the atom. अब limitation of Bohr's theory में भी कुछ limitations थे. क्या क्या था? Following are some of the limitation of Bohr's theory. पहला limitation, this theory is applicable only to simplest atom like hydrogen with Z is equal to 1. The theory fails in case of atoms of other element for which Z is greater than 1. The theory does not explain why orbits of electrons are taken as circular while elliptical orbit are also possible. तीसरा, Bohr's theory does not explain. ठीक है? So Bohr's theory does not explain how fine structures So Bohr's theory does not explain the fine structure of spectral lines even in hydrogen atoms. Fourth, Bohr's theory does not say anything about the relative intensity of spectral lines. Bohr's theory does not take into account the wave properties of electron. Bohr atomic model does not give any indication regarding the arrangement and distribution of electrons in an atom. Bohr's model could not explain the splitting of spectral lines under the effect of magnetic field, and Bohr's model could not explain the splitting of spectral lines under the effect of electric field, जिसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं. अब ये तो हम लोगों ने हाइड्रोजन के लिए हम लोगों ने ये सारा पढ़ा था जो स्पेक्ट्रम है.
अब ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स कैसे बिहेव करते हैं? सो as is known, hydrogen atom has a single proton in its nucleus and a single electron is revolving around the nucleus in a circular orbit. Okay. Now, an atom consisting of a nucleus of charge plus Za, where Z is where Z is the atomic number of the atom, but having a single electron revolving around the nucleus is called hydrogen-like atom. For example, single ionized helium, that is He42, has Z is equal to 2 and a single electron revolving around the nucleus. Okay. As out of 2 electrons, one has been removed. Singly ionized helium हम लोग कह रहे हैं, right? Now, second, a doubly ionized lithium atom, right? So doubly ionized lithium atom, lithium 73, has Z is equal to 3 and a single electron revolving around the nucleus. As out of 3 electrons, 2 have been removed. Now, we can show that radius r dash n of the nth orbit of hydrogen-like atom is Rn by Z. For example, for singly ionized helium atom, radius of the first orbit is 0.265 angstrom, and the speed V dash n of electron in the nth orbit of the hydrogen-like atom is Z into Vn. For example, speed of electron in first orbit of singly ionized helium atom is V naught dash, that is Z V naught. So 2 into 2 into 10 to the power 6. And speed of electron in first orbit of doubly ionized lithium atom, Z is equal to 3, is V naught dash Z V naught, that is 3 into 2 into 10 to the power 6 meter per second. Now, energy of electron in nth orbit of hydrogen-like atom is minus 13.6 Z square by n square. तो वहां पे बस minus 13.6 by n square था, याद करो. यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक एटम है तो यहाँ Z square भी आ गया. So for example, energy of electron in first orbit of singly ionized helium atom is minus of 13.62 square by 1 square, so minus 54.4 electron volt. And energy of electron in first orbit is doubly ionized lithium atom is minus 13.6 into 3 square by 1 square, so minus 122.4 electron volt. So note that some energy levels of singly ionized helium atom are same as that of hydrogen atom. Therefore, spectrum of light emitted by helium plus atom and hydrogen atom may be same. Now, excitation and ionization potentials. So, an electron revolving in a stationary orbit of an atom absorbs some energy. Two things may occur. First is the electron may jump over to an outer orbit of higher energy. This process, in which absorption of energy by an electron takes the electron from an inner orbit to some outer orbit of higher energy, is called excitation. Okay? The atom is said to be in excited state. The minimum accelerating potential, which provides an electron energy sufficient to jump from the innermost orbit to one of the outer orbits, is called excitation potential or resonance potential. For example, in case of hydrogen atom, energies of electron in various orbits are E1 is minus 13.6 minus 3.4, ये हम लोगों ने देखा ही था. Energy required to raise an electron from ground state n is equal to 1 to first excited state n is equal to 2. So n is equal to 1 से जब हम इसको उठा के n is equal to 2 पे हम लोग लेके जाएंगे,
So E is equal to E2 minus E1, which is minus 3.4 minus of minus 13.6, that will be 10.2 electron volt. So corresponding exciting potential is 10.2 electron volt. So excitation potential 10.2 volt होगा, वो electron को raise करना है. Similarly, energy required to raise an electron from ground state, that is n is equal to 1, to second excited state, that is n is equal to 3, is E3 minus E1, that is 12.09 electron volt. Corresponding excitation potential is 12.09 volt and so on. The excitation potential of an atom is not one. It can have many values depending on the state to which the atom is excited. Now, if the energy supplied is so large that it can knock out an electron from an atom, the process is called ionization. Thus, ionization is the phenomena of removal of an electron from an atom. The minimum accelerating potential, which would provide an electron energy sufficient just to remove it from the atom, is called ionization potential. For example, total energy of electron in ground state of hydrogen atom is equal to 13.6 electron volt. This is equal to minus 13.6 electron volt. Right. To remove this electron from the hydrogen atom, plus 13.6 electron volt energy is required. So ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt. Ionization potential of hydrogen atom is 13.6 volt. The general expression for ionization potential of an atom is V is equal to E dash N, that is minus 13.6 Z square by N square volt, where Z is the charge number of the atom and N is the number of orbit from which electron is to be removed. Note that for a given element in ground state, ionization potential is fixed, but for different elements in ground state, ionization potentials are different. ठीक है, तो ये तो है पूरा जो चैप्टर है, और now we'll do some questions based on this. Just give me 2 minutes to pull down all the questions, and then I can, maybe start it. So just give me 2 minutes, बच्चों, हाँ?
Yeah. So we had to start with the questions. So first question is, calculate the change in angular momentum of electron when it jumps from fourth orbit to first orbit. ठीक है, तो जो n is equal to 4 to n is equal to 1 पे है ना, ये जंप कर रहा है, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, सो दैट इज mvr क्या होता है, nh by 2 pi, so this is n4 h by 2 pi minus n1 h by 2 pi. So देखो h by 2 pi 4 minus 1 h by 2 pi. 4 minus 1 हमारा 3 है, h by 2 pi, h का वैल्यू 6.6 into 10 to the power minus 34 हो गया. 2 pi मतलब 2 into 3.14. So this is 3 into 6.6 divided by 6.28. So 3.15 into 10 to the power minus 34. Joules second. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Next है the energy of electron in hydrogen atom is given by minus 13.6 by n square electron volt. ये अभी हम लोग पढ़ भी रहे थे. Energy in nth orbit is minus 13.6 divided by n square electron volt, where n is equal to 1, 2, 3. Show that the electron in hydrogen atom cannot have an energy of minus 6.8 electron volt. Spacing between the lines, तो तुम क्या करो ना, तुम इसको बेसिकली क्या है, अगर ये minus 6.8 is equal to minus 13.6 n square, right? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, n स्क्वायर इज इक्वल टू 13.6 बाय 6.8, माइनस माइनस कैंसिल हो गया. अब अगर ये n स्क्वायर का वैल्यू, मतलब n का वैल्यू अगर एक इंटीजर नहीं आता है, तब दिस इज नॉट पॉसिबल. तो n स्क्वायर का वैल्यू अब यहाँ पे हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे, राइट, सो 13.6 divided by 6.8, so this is 2. अब n का वैल्यू क्या हो गया, √2 हो गया, ठीक है, which is not an integer, right? So electron in hydrogen atom cannot have an energy of 6.8 electron volt, ठीक है ना. Now spacing between the lines within the given set of observed hydrogen spectrum decreases as n increases. तो जैसे जैसे n increases, ठीक है, spacing between the lines decreases. देखो यहाँ पे क्या होता है, En is equal to minus 13.6 by n square. Now as n increases, energy difference between two consecutive energy levels decreases. ठीक है बच्चों?
Next question है, the energy level diagram of an element is given here. Which transition corresponds to the emission of spectral line of wavelength 102.7 nm? तो हम लोग को ये निकालना है कि इतने ये वेवलेंथ किस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वेवलेंथ को, और उससे हम लोग एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं. तो एनर्जी is equal to emitted is equal to hc by lambda. अब ये वैल्यूज पुट करो, 6.6 into 10 to the power minus 34, c का वैल्यू 3 into 10 to the power 8 by wavelength 102.7. ये तो FM का चैनल है 102.7, है ना? कौन FM कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता है. एनीवेज, तो ये हमारा इसको कैलकुलेट करेंगे. बेसिकली क्या कह रहा है कि ट्रांजिशन, विच ट्रांजिशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन दिस. तो पहले हम लोग ये वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद देखेंगे किस ट्रांजिशन में, ये ए वाले में ट्रांजिशन क्या हो रहा है, 1.5 और 0.85, इसके बीच का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस. अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो इसको क्या करेंगे, इंटू 1/1.6 इंटू 10 to the power minus 19 से डिवाइड भी कर लेंगे. तो इससे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल जाएगा. अब ये निकाल के देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रहा है. सो दिस इज इक्वल टू 6.6 into 3 divided by 102.7 2.7 into 1.6. So this is 0.12, 10 to the power minus 34 plus 8 is minus 26, and 19, 625 plus 25 minus 1. तो 1.2 into 10 to the power minus 2. तो ये 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हम लोग को गलत आ रहा है, फिर से इसको कैलकुलेट करते हैं. 6.6 into 3 divided 0.12 into minus 26 and plus 25. Plus or minus 1. अच्छा 28 है ना, प्लस 2 हो गया. दिस इज इक्वल टू 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब ये जो 12.1 आया है, देखो हम लोग को ये दिख ही रहा, देखो इन दोनों, इन सी में तो होगा नहीं 3.4 और 1.5 का डिफरेंस, दिस इज नॉट देयर.
3.4 और 0.85 में भी नहीं है, 1.5 और इसमें भी नहीं है। डी वाले में जो डिफरेंस है, ये डी वाले में, दिस इज -3.4 माइनस ऑफ -13.6, सो विच इज इक्वल टू, जो डी वाले के साथ एनर्जी एसोसिएटेड है, -3.4 प्लस 13.6, दैट इज 10.2, सॉरी 3.4 नहीं 1.5 था यहाँ पे, -1.5 minus minus, so -1.5, and this will be plus of 12.1 electron volt. So ये जो wavelength का जो spectral line है, that will correspond to the spectrum D basically. So which transition corresponds to the emission of the spectral line of this? So transition from -1.5 electron volt to -13.6 electron volt will correspond to this spectral line of wavelength 102.7 nm. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes. Next है, in the ground state of hydrogen atom, ठीक है, in the ground state of hydrogen atom, its Bohr radius is 5.3 into 10 to the power -11 meter. The atom is excited such that the radius becomes 21.2 10 to the power -11 meter. Find the value of principal quantum number and total energy of the atom in excited state. ठीक है, so हम लोग को पता है ठीक है, ये जो रेशियो था बोर रेडियस, हाँ कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा बोर रेडियस होता है r, दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द ये स्क्वायर ऑफ द नंबर, जो क्वांटम नंबर r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर ना। इससे हमें आ जाएगा n1 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर इज इक्वल टू r1 अपॉन r2। सो अब हम लोग वैल्यूज अगर डालते हैं, ठीक है, सो वील गेट R1 का जो वैल्यू है दैट इज 5.3 into 10 to the power -11 by 21.2 10 to the power -11. So this is 0.25 or 1/4. So इससे n1 by n2 आ जाएगा 1/2. So that means n2 is equal to twice of n1. First equation. Okay. Now E2 is equal to E1 by n square. Total energy of the atom in excited state निकालना है, ठीक है। So E2 is equal to E1 upon n square. So that is -13.6 upon 2 square हो जाएगा सेकेंड वाले पे। पहले तो n2 is equal to 2 into
तो ग्राउंड स्टेट में ये बता रखा है ऑफ द हाइड्रोजन इट्स बोर रेडियस इज दिस. तो N1 जो है 1 है, N2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 है ना. N1 इज इक्वल टू 1, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो N2 इज इक्वल टू 2 हो गया. सेकेंड जो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसका 2 हो जाएगा. और एनर्जी E1 by n square minus 13.6 by 2 square. So this is 3.4 minus 3.4 electron volt. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. ये जो रिलेशन है ना, ये इससे आता है जो हम लोगों ने कल निकाला था. रेडियस r इज इक्वल टू n स्क्वायर s स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m k z a स्क्वायर. तो यहाँ पे बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो इससे हमारा आ जाता है r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. There are two more questions. I'll just take a screenshot, जो कि आप लोग screenshot ले लो. दोनों question attempt कर लेना. एक ये question है, ठीक है, और दूसरा एक और ये question. तो ये दोनों थोड़ा important है, इसको एक बार attempt कर लीजिएगा. नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में तुम्हें करा दूंगा. और हम लोग अगली क्लास में न्यूक्लियाई स्टार्ट करेंगे. फिर न्यूक्लियाई से तो बहुत पोर्शन हट गया है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में. वैसे उसमें रेडियो एक्टिविटी वगैरह भी है, मेरे ख्याल से 2-3 क्लास में वो भी खत्म हो जाएगा, 3 क्लास में. सो विल ट्राई एंड फिनिश दैट इन दिस वीक. तो उसके बाद फिर हम लोग का एक ही चैप्टर बचेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. उसमें भी बहुत छोटा पोर्शन अब आता है, बाकी पोर्शंस तो रिमूव हो गया है. वो भी 2-3 क्लास में खत्म हो जाए. तो मे बी 5-6 more classes we need. So by 15th December we will be able to complete everything. चलो we'll stop here, है ना. इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है. बाय बच्चों. बाय एंड टेक केयर.